Hello my dear students, good morning and Jai Hind to you all. So guys, as your first UT, that means your first unit test is completed. And now again we have to start our classes. Now, I am going to start our first class after unit test 1. Okay, and I will start with civics. Okay, so now today we are going to discuss the second chapter of civics. First chapter, what is constitution and why constitution, we have completed. I hope that is all clear to you. And now today I am going to start the second chapter, and that is the constitutional design. In our first chapter I have already told you that about constitution. Okay, we will discuss in the next chapter. So this is the second chapter, constitutional design, that how our constitution is formed, why it is formed, why it is important for us, and who are the people who have formed this. Okay, and there are so many different type of questions which are related to the topic constitution, which we will discuss here in this chapter. Look, we are living in India, so we have to discuss the constitution of India. But before this, we will discuss the constitution of South Africa, because this idea of the constitution, first of all, it came from South Africa. Okay, so look, this is our civics second chapter, constitutional design. We are going to start this. So second chapter will be started with this topic, constitution, because we are going to discuss about the constitution. So first of all, we should know that what is constitution, then we will discuss about it, that why it is formed, how it is formed, who were the people who have formed this. Okay, so first let's discuss constitution, that what it is. Constitution hai kya actually? Okay, so simply I had told you in your first chapter that the set of rules and regulations, okay, which help to रेगुलेट अ कंट्री, है ना, किसी भी कंट्री को अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो सेट होता है, जो पीपल्स को राइट देता है, जो गवर्नमेंट को बाउंड करता है ना, दैट सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. बट नाउ हियर यू कैन फाइंड आउट विद द क्लियर डेफिनेशन, दैट इज द सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो. ओके, व्हाट दिस इज द सेट ऑफ द बेसिक रूल्स, है ना, बेसिक रूल्स का जो सेट होता है, दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो, दैट शुड बी फॉलोड बाय द कंट्री, by the citizens and the government of the country are called as constitution, you can say. Okay, so simply I hope now this is clear to you that what is constitution. Simply we can say the constitution is a set of basic rules and rights, okay, which the people of the country, that means the citizen of the country and the government of the country have to follow. Okay, and now कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो सेट है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, दैट शुड बी फॉलोड बाय द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट. बट इसमें है क्या एक्चुअली, ये किस टाइप के रूल्स हैं एंड व्हाट दे आर रिलेटेड फॉर. सो यू कैन से इट डिटरमाइंस, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या बताते हैं, क्या दिखाते हैं. सो दे डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन. ओके, दैट मीन्स इन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से देयर आर द राइट्स फॉर द सिटीजन्स. जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, ये सब कहाँ हमको मिले हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में है. नेक्स्ट वन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, द सिटीजन ऑफ द द राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड आफ्टर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंस इन कॉन्स्टिट्यूशन. फाइन. आफ्टर दैट द लास्ट वन, and how the government should function. Okay, that means in constitution there are three important things. First, the right of citizen. Second, the function of government. Third, the power of the government. Okay, so there are three things which are determined in constitution. So I hope now this is clear to you all that what the constitution is. Okay, and now we are going to discuss the ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. की कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सेट जो है रूल्स एंड राइट्स का, ये रेगुलेशंस का, ये एक्चुअली इसका आइडिया मिला कैसे, कहाँ से. ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंडिया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. हम पहले साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका इज फॉर्म्ड. ओके, एंड व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. ओके, सो for understanding this thing, again I am going to connect you to our history first chapter, the French Revolution. जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो हमने उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में. सेम एज
today we are going to discuss the constitution of South Africa. So first we will discuss that the society of South Africa during 17th and 18th century, because this was started from the 17th and 18th century. Okay, so the society of South Africa during 17th and 18th century, this we are going to discuss about. So just again give me a single moment to write all these topics and then I will come. Now, so look, now we are going to discuss the South African society during 17th and 18th century, because this was started in 17th and 18th century. Look, as we can say, as we were ruled from the Europeans, the British, British people came here and they ruled over us. So after you can say over 400 300 और 400 years, है ना, 300-400 years तक क्या किए थे जो ब्रिटिश पीपल थे, जो यूरोपियन पीपल्स थे, वो इंडिया आए थे और इंडिया पे कंट्रोल किया था, इंडिया को रूल किया था. इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, लाइक मुस्लिम्स, द हिंदूज, है ना, द फार्मर्स, द पुअर्स, द रिचर्स. सेम एज these British people, these Europeans came South Africa also. Okay, we can say वो साउथ अफ्रीका भी आए थे और वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया था, लोगों को डिवाइड करके अलग अलग कैटेगरीज में, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका पे भी कंट्रोल कर लिया था. इंडिया में वो सिर्फ आए थे यहाँ पे रूल करने, बट साउथ अफ्रीका में वो गए थे और वहीं पे सेटल हो गए थे. बहुत सारे लोग थे यूरोप के जो वहीं पे गए थे साउथ अफ्रीका में और वहीं पे सेटल हो गए थे. सो एज यू नो, दीज पीपल, okay, which were belonging to Europe, British, okay, were white in color, and same as the opposite, the South African people were black in color. On the basis of this skin color, okay, these Europeans divide the society into 3 categories. Okay, so we can say during 17th and 18th century the society of South Africa was divided into 3 parts. The first one, blacks. Okay, who were blacks? The native people of South Africa who were black in color. That means ये वो पीपल थे, ब्लैक्स कौन थे? जो साउथ अफ्रीका के रियल पीपल थे, जो साउथ अफ्रीका में पहले से रहते थे, जिनका स्किन कलर ब्लैक था. दे वर नोन एज ब्लैक कम्युनिटी, ब्लैक कैटेगरी. ओके, मेड ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के पीपल हैं तो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के पीपल ज़्यादा होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन वर ब्लैक्स. दे वर ब्लैक इन कलर, दे वर नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. दैट मीन्स वो वहाँ पे पहले से रह रहे थे, वो वहीं के लोग थे. What was the second community? The second category community was whites. Okay, these were Europeans. So look, the people of Europe who came to South Africa and settled there during 17th century. 17th सेंचुरी में जो यूरोप से पीपल आए थे, जो ब्रिटिश पीपल आए थे यूरोप से साउथ अफ्रीका में, वो 17th सेंचुरी में यहाँ आए और यहीं पे सेटल हो गए, यहीं पे बस गए, यहीं पे रहने लगे. ओके, एंड दे डिवाइडेड देमसेल्फ अनदर कैटेगरी नोन एज वाइट्स. वो खुद को वाइट्स कहते थे, और जो साउथ अफ्रीका के लोग पहले से वहाँ पे रहते थे, जिनका स्किन कलर ब्लैक था, वो उनको ब्लैक्स कहते थे. एंड द थर्ड वन विच हैज़ द मिक्स रेसेस, मतलब जो कुछ ब्लैक भी थे, कुछ वाइट भी थे, लाइक इंडियंस वी आर. ओके, so look, the third category was colored category. Who belongs to this category? The people of mixed races were called as colored. मतलब colored category में कौन people थे? वो लोग थे जो white भी थे और black भी थे. जैसे Indian people होते हैं, most of the Indian peoples, ये नहीं completely black होते हैं, नहीं completely white होते हैं, ये mixed races वाले होते हैं. And these type of people were known as colored category in South Africa during 17th and 18th century. So many people of India, जो इंडिया से लोग यहाँ से साउथ अफ्रीका चले गए थे, वहाँ सेटल हो गए थे, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया था. they were known as colored people. Okay, so you can say during 17th and 18th century South African society was divided into 3 categories: the blacks, the white, the colored. Blacks, the native Africans; white, the Europeans; and colored, the people of the mixed races. Okay, and look, they have made so many different type of rules and regulations for these categories. जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि क्लर्जी हैज़ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, the nobles has different rules and regulations, and the people of third state had different rules and regulations. Same as here also in South Africa, there were so many different type of rules, regulations and restrictions for the black community. There were so many privileges for the white community, and the colored community was also treated as black. Okay, but इनको
कुछ छूट दी जाती थी. And now we are going to discuss about the restrictions, that rules and regulations which were followed by the blacks and whites and these colored categories communities during 17th and 18th century. So just again give me a single moment. So write all that rules and regulations and then we will discuss. Look guys, now I hope the the South African society during 17th and 18th century is clear to you. And now we are going to discuss the rules and regulations which they have to follow. The blacks, whites and the colored people had to follow the rules and regulations during 17th and 18th century. They are, look, first of all, the first rule, the first restriction you can say, non-white people did not have voting rights. First of all, what was the rule? This was the most important rule, very prominent rule. क्यों? Because इस रूल की हेल्प से ही सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बने गए, डिफरेंट हो गए, अलग हो गए. क्योंकि अगर हम अपना किंग नहीं चूज़ कर सकते तो डेफिनेटली जो अपना किंग चूज़ करेंगे वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचेगा. सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन of the blacks. Non-white people did not have voting right. That means only the white people can vote. The colored people, the black people did not had right to vote. Okay, in South Africa. After that, the second one, black were forbidden from living in white area. That means there was a different area for the people, for the white people where they live. साउथ अफ्रीका में एक अलग ही सोसाइटी बन जाती थी, एक अलग ही एरिया हो जाता था जहाँ पे वाइट लोग रहते थे और उस एरिया में ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल का जाना अलाउ नहीं था. वहाँ जाने के लिए, वहाँ पे जाके काम करने के लिए उनको परमिट लेना पड़ता था. नेक्स्ट वन, ब्लैक्स कुड नॉट विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्ड. ऑल्सो दिस, जहाँ पे वाइट लोग, दैट मीन्स जहाँ पे यूरोपियन पीपल, द सेकेंड कम्युनिटी यू कैन से, द वाइट कम्युनिटी, जहाँ पे पूजा करती थी, द चर्चेज, वहाँ पे ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल का जाना अलाउ नहीं था. ओनली द वाइट पीपल कैन वर्शिप इन द चर्चेस. ऑल द सोशल प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, थिएटर्स, लाइब्रेरीज, बसेस, ट्रेन्स एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अदर सोशल प्लेसेस, ओके, where blacks and colored people were restricted to go. Okay, these social places were separate for the white community only. Okay, ये सारे जो places थे, ये सारे social places जो थे, ये white community के लिए अलग, black और colored community के लिए अलग बनाए गए थे. कोई भी black और colored community का person उस different social community जो white के लिए बनाई गई थी वहाँ पे जाना उनका restricted था, वो वहाँ नहीं जा सकते थे, permit लेके भी नहीं जा सकते थे. Next one, black could not form their associations. This is also very important. Black could not form their associations or protest against the terrible treatment. That means जो black people थे, जो colored people थे, उनको ये पावर नहीं दिया गया था कि वो एसोसिएशन बना सके, वो ग्रुप्स बना सकें, और उनका प्रोटेस्ट करना भी प्रोहिबिटेड था. वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे किसी भी बैड ट्रीटमेंट के लिए. मतलब अगर कोई उनको हार्श कर रहा है, कोई उनको आप कह सकते हैं बॉदर कर रहा है, कोई वाइट पीपल है, तो कोई भी ब्लैक कम्युनिटी का पीपल या कलर्ड कम्युनिटी का पीपल उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, ग्रुप नहीं बना सकता. ओके, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट restrictions, you can say, the rules and regulations which were followed by the community of the South Africa during 17th and 18th century. And due to these rules and regulations, there were necessary to make a constitution. कैसी चेंजिंग आई? जैसे फ्रांस में चेंजिंग आई थी, लुई 16 चेंज हुए थे, किंग रूल चेंज हुआ था, मोनार्क सिस्टम चेंज हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था. सेम एज यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये एक तरीके से मोनार्क सिस्टम है. सोसाइटी भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाइट है ना, वाइट कम्युनिटी है ना, जैसे वहाँ क्लर्जी होते थे फ्रांस में, तो सेम कंडीशन यहाँ भी चल रही थी और इसी की वजह से अब यहाँ चेंजिंग आएगी. एंड देन there will be a constitution, the rules and regulations for the white also, that will be known as the constitution, जो हम next class में discuss करेंगे. I hope जो भी हमने आज discuss किया, constitution, the society during 17th and 18th century in South Africa, and the rules and regulations, the restrictions which the blacks have to follow, this is all clear to you, I hope. In the next class we will discuss that how the constitution was formed in South Africa. Okay, thank you and Jai Hind guys, take care.